चलिए जी शुरुआत करते हैं जनाब। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच एक बड़ी खबर की, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद रियासत तस्लीम करने के हुक्मनामे पर थोड़ी देर पहले दस्तखत कर दिए हैं। ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के होने के साथ ही अब ये खबर सामने आ रही है कि इलाहिदगी की या तस्लीम करने की दस्तखत और हुक्मनामे जारी करने के साथ ही जंग के आसार काफी नुमाया रूस और यूक्रेन के बीच दिख रहे हैं। इधर इस हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी और दीगर मुल्कों ने भी इस पूरे मामले पर जो है वो संजीदगी का इजहार करते हुए अफसोस किया है कि पुतिन को इस तरीके का ऑर्डर देना नहीं चाहिए था। इधर हंगामी तौर पर बिल्किन ने यूएस के जो डिप्लोमेट्स और स्टाफ यूक्रेन के अंदर है उन्हें पोलैंड शिफ्ट कर दिया है और सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। ताहम जो कल हम खबर देख रहे थे कि शायद इफाम तफहीम होगा, वो इफाम तफहीम आज इस खबर के साथ ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है और अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के 2 इलाहिदगी पसंद इलाकों को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के इंतजामी ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से पुतिन ने कौम से तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा तवील खिताब किया, जिसमें उन्होंने सोवियत यूनियन टूटने, यूक्रेन के मामला, नेटो और अमेरिका के इक़दामात पर तफसील के साथ बात रखी। आखिर में पुतिन ने ऐलान किया कि उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और रूसी पार्लियामेंट से कहा है कि वो जल्द अज जल्द इसकी तौसीक करें। पुतिन ने अपने खिताब के इख्तिताम पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि रूसी अवाम की हिमायत रूसी अवाम की भी इस पूरे मामले पर हिमायत हासिल होगी। रूस ने फ्रांस और जर्मनी के मंसूबों को भी मद्देनजर रखते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि इन मुल्कों को भी आगाही पहले ही दिला दी गई थी। और जब हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती इजलास, काउंसिल का इजलास जो है वो शुरू हो गया है और इस इजलास के अंदर यूक्रेन बज़िद है कि वो इस हुक्मनामे को नहीं मानेगा और किसी भी तरीके से किसी की धमकी या किसी की जो मुहिम जो ही है उसे तस्लीम नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस वक्त हंगामा खेज बहस यूक्रेन के मामले पर जारी है, लेकिन फटाफट से आपको सुनाते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत करने से पहले क्या कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया। The aggressive nationalistic character of the regime that seized power in Kiev hasn't changed. I consider it necessary to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk and Lugansk People's Republics. Act 2, the signing ceremony. The leaders of the rebel republics were already in Moscow. They clearly knew what President Putin's decision would be. The Secretary General is greatly concerned by the decision by the Russian Federation related to the status of certain areas of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. He calls for the peaceful settlement of the conflict in eastern Ukraine in accordance with the Minsk Agreement as endorsed by the Security Council in 2015. The Secretary General considers the decision of the Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. The United Nations, in line with the relevant General Assembly resolutions, remains fully supportive of the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine. मुत्तहिदा के अंदर जो इस वक्त इजलास चल रहा है जी, उसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर इस वक्त भारत के नुमाइंदे, मुस्तकिल नुमाइंदे जो है टी.एस. मूर्ति, वो भी थोड़ी देर पहले खिताब कर रहे हैं और उस खिताब के दौरान उन्होंने जहां दोनों
तरफैन से इफाम तफहीम के जरिए से, बातचीत के जरिए से और सब्र तहम्मुल से काम लेने के लिए अपील की है। वहीं पर 20,000 भारतीय और बच्चे जो वहां पर मौजूद है उनकी सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। टीएस मूर्ति के साथ साथ इस वक्त कई और मुल्कों की तरफ से भी रिएक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। ताम ये साफ हो रहा है कि ये इजलास जो है ये इंतहाई अहम और हंगामा खेज हो रहा है। बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल काउंसिल के इजलास से आपको दिखा रहे हैं जी। ये बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं। Of Ukrainian shelling of residential areas of LPR and DPR, and the 1,600 shells have been shot. Civilians have been killed. The territory of the republic has been penetrated by subversive groups who have carried out or tried to carry out sabotage of critical infrastructure. As I already said, there are casualties from among the civilian population. The LPR and DPR have declared general mobilization. It's in Russia and not Ukraine that refugees have flooded to. Over the last few days, the number of evacuated women, old people and children has reached around 60,000 people, and Russia is hosting them and providing them with conditions for them to be housed and supported. There has also been shelling of some towns and villages on Russian territory near the border zone. And so it has become clear that Donbass is on the brink of a new Ukrainian military adventure, as was already the case in 2014 and 2015. We cannot allow that. That is why the Russian president heeded the opinion of parliamentarians and members of the Russian Security Council, and you know the rest. A detailed statement from our head of state about the reasons of this decision that has been taken was broadcast in detail by all the world's leading media. Today it's true we ये बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तकरीर इस वक्त चल रही है और मुख्तलिफ मुल्कों के मंदोबीन की तरफ से इस वक्त अपनी अपनी बात जो है वो रखी जा रही है। भारत ने भी इस पूरे मामले पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत जो है वो कर दी है। 43 मिनट्स पे बोला है, 43 इस टाइम 43 मिनट्स पे चलवा दो थोड़ा सा, बाद में कहाँ चले करो फिर 43 पे। और इस बीच दोनों तरफ से बात रखी गई है, रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से। सलामती काउंसिल का इजलास, चूंकि रूस इसकी सदारत इस वक्त कर रहा है, रूस ने इमरजेंसी इजलास बुलाया है और तमाम ममालिक की तरफ से अपनी अपनी राय दी जा रही है जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। भारत की तरफ से एक बार फिर से इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है कि कशीदगी मजीद इससे आगे ना बढ़े। अब मुज़ाकराती अमल का वक्त जो इससे पहले जिसके लिए बार बार जोर दिया जा रहा था उसका आ गया है। और दूसरी बात, यूक्रेन ने उन सभी फैसलों को जो रूस की जानिब से पिछले 12-13 घंटों के दौरान लिए गए हैं उनको मानने से सलामती काउंसिल के इजलास में न सिर्फ इनकार किया है बल्कि यह भी कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए अब उसे किसी हद तक जाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो वो उसके लिए चलिए भारत के मंदोबीन क्या कुछ कह रहे हैं जरा इसको पहले सुन लेते हैं जल्दी से। We need parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of Minsk agreements, including key security and political aspects. As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. I thank you. चलिए जनाब, ये तो बात हो रही थी जनाब यूक्रेन, रूस और फ्रांस के हवाले